हेलो एवरीवन, आई एम गौतम खुआ। फाइनली बजट अनाउंस हो चुका है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ समरी ऑफ बजट 2026। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। Firstly, there are no changes in income tax slab rate under the old regime and new regime. Also, default regime under section 115 BSC will also be continuous. Then budget 2026 में कुछ टैक्सेस में चेंजेस किए, स्लैब रेट में चेंजेस तो नहीं किया। टीसीएस टीडीएस के रेट में चेंजेस किया है और मोस्टली फोकस किया है ऑन द ईज ऑफ कंप्लायंस एंड ईज ऑफ लिविंग। नाउ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्शन। Earlier deduction was allowed only if deposited within the respected due date, but now onwards it will be allowed if deposited by the ITR due date. पहले अगर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपने पे कर दिया तभी आपको डिडक्शन अलाउड होता था, बट अब अगर आपने 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ नहीं पे किया पर आईटीआर के ड्यू डेट से पहले पहले आपने पे कर दिया, देन यू विल आल्सो गेट डिडक्शन। नाउ एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट इनकम अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। पहले आपको इंटरेस्ट मिलता था, जो इंटरेस्ट इनकम होती थी वो 50,000 के ऊपर की जो इनकम होती उसके टीडीएस एप्लीकेबल था। अब वो प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया। अब जो आपकी इंटरेस्ट इनकम की वो फुल एग्जाम होगी और उसका कोई टीडीएस नहीं कट होगा। दैट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2026। नाउ देयर इज अ बिग चेंज इन टीडीएस सर्टिफिकेट। पहले आपको नो टीडीएस सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना पड़ता था अथॉराइज ऑफिसर के पास और मैन्युअल एप्लीकेशन करनी पड़ती थी, बट अब यही सारी प्रोसेस हो जाएगी ऑनलाइन ऑन द डिजिटल मोड for by filing the e-file. Electronic filing and automatic certificate will be generated. That will take effect from the first day of April 2026. Now there are the certain exemption on compulsory acquisition of land. Earlier there was the exemption through circular, but now for the to align the such all the provision, the statutory exemption for armed and primary force. अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी होती थी फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट तो आपको एज ए इंडिविजुअल एचयूएफ टैन नंबर रिक्वायर था, मैंडेटरी। बट अब ये प्रोविजन रिमूव कर दी थी और अब आप विदाउट ऑब्टेनिंग द टैन प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट। बट note that this amendment will take effect from the first day of October 2026. Now exemption for disability person to armed force personnel. पहले एग्जाम्पशन दिया गया था फ्रॉम थ्रू सर्कुलर, बट नाउ देयर आर स्टैट्यूटरी एग्जाम्पशन दे दिया टू ऑल, टू एवरीवन, एंड दिस अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2026. Supply of manpower. Earlier there was a confusion between the contractor and professional service. Now the manpower service is classified as a work, hence the TDS and under 194C will be deducted for manpower services, and this amendment will take effect from the first day of April 2026. Now, there are also certain changes in the return filing due date for non-audited business case and partner of a firm whose account are not required to be audited under this act or any other law in force. पहले ड्यू डेट हुआ करता था 31 जुलाई और अब 31 जुलाई को बढ़ के करा दिया है 31 अगस्त। नाउ रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट भी चेंज कर दी है। पहले आप विद इन द 9 मंथ रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे, पर अब आप विद इन द 12 मंथ रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर पहले आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे थे फॉर लॉस रिडक्शन, देन इट वाज नॉट अलाउड, बट नाउ अगर आपको लॉस रिडक्शन करना है बाय फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, देन इट इज अलाउड if the loss is reduced. If loss is not reduced, then it will not be allowed to file the updated return. Earlier, if you was filing updated return after the reassessment notice, then it was not permitted. But now onwards, you can file the updated return after the reassessment notice, but you have to pay additional 10% tax
Then only you can file updated return after the reassessment notice. Now, there are the certain changes in LIS provision and TCS rate also. Overall LRS limit is same as earlier, which is 2,50,000 per person per financial year. In sale of alcoholic liquor from human consumption, it was 1% and it is increased to 2%. In sale of tendu leaves, rate was 5%, which is decreased to 2%. In sale of scrap, rate was 1%, which is increased to 2%. And in sale of minerals, coal, lignite or iron one, rate was 1%, which is increased to 2%. If you are remitting exceeding the 10 lakh rupees, then if you are remitting for the purpose of education or medical treatment, 5% was applicable, and if you are remitting other than education or medical treatment, then 20% was applicable. From now onwards, if you are remitting for the purpose of education or medical treatment, the 2% will be applicable, and if you are remitting for other than education or medical treatment, 20% will be applicable. For sale of overseas tour program package, including expense for travel or hotel stay, or boarding or loading, or any such similar or related expense. If the amount is up to the 10 lakh, then 5% TCS rate was applicable, and if amount is exceeding 10 lakh, then 20% TCS rate was applicable. But from now onwards, only 2% TCS rate will be applicable irrespective of the amount. That is all about the budget 2026. I hope you like this video. Thank you.